the story is only getting bigger there. Let's in the meantime move on and talk about the Prime Minister. The Prime Minister who will be visiting 4 states in the next 2 days, as this includes Sikkim, West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh. But the focus clearly is on Bihar visit, which goes to polls later this year, and West Bengal, which is expected to vote in March next year. Now in West Bengal, the Prime Minister will be laying the foundation stone of a city gas distribution project in Alipurdwar and in Cooch Behar districts around 2:15 p.m. After that, the Prime Minister will move to Bihar, where he is scheduled to launch projects worth over 50,000 crores. Now, the Prime Minister will be landing in Patna, where he is expected to inaugurate the new terminal building of the Patna airport. Thereafter, he will be holding a 6-kilometer-long roadshow from Patna airport to the state BJP headquarters, where as many as 32 welcome arches have been erected by the BJP leaders. Now, at the BJP headquarters, the Prime Minister will be meeting the local party leaders and the workers there. The new terminal built that the Prime Minister will launch at Patna airport has been built at a cost of around 1,200 crores. It can handle 1 crore passengers per year, and also the Prime Minister will be laying the foundation stone of the new civil enclave in Bihta Airport worth over 1,400 crores. Times Now visited the new terminal building, which the Prime Minister will be inaugurating today. Take a look. ये पटना एयरपोर्ट का एंट्रेंस एरिया है, यानी कि जो यात्री आएंगे वो इसी रास्ते से, जो चेक इन काउंटर आप एक के बाद एक देख रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर चेक इन के बाद इसी रास्ते से अंदर जाएंगे। चूंकि प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो उसकी तैयारी यहाँ पर जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पर घूमेंगे भी, पूरा एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। इसके वजह से यहाँ पर सजावट जो है वो यहाँ पर की जा रही है फूलों से। पूरा जो एरिया है, जो जहाँ पर लॉबी है, लोग यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर चेक इन काउंटर है, वहाँ पर पूरी तरह से सजावट यहाँ पर की जा रही है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जा रहा है। तमाम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं वो भी इसमें जुटे हुए हैं, और प्रधानमंत्री चूंकि इस एरिया में बैठेंगे, यहीं से उद्घाटन भी होगा और ये पूरी जगहों पर प्रधानमंत्री घूमकर भी विजिट करेंगे। पहले जो एयरपोर्ट है पटना का वो काफ़ी छोटा था, इस वजह से बहुत सी परेशानियां थी, लेकिन अब देखिए चेक इन काउंटर जो है अलग अलग एयरलाइंस की यहाँ पर आप अभी भी देख पा रहे हैं। ये तमाम तैयारियां जो यहाँ से चेक इन करेंगे, आप बोर्डिंग के लिए पहुँचेंगे लोग, तो बहुत सारे काउंटर्स बनाए गए हैं दाहिने और बाएं दोनों तरफ। लगभग 60 से ज़्यादा काउंटर जो है वो अब यहाँ पर बनकर तैयार हैं और 64 के आसपास ये काउंटर्स जो हैं वो यहाँ पर बन गए हैं। Meanwhile, politics that has erupted ahead of the Prime Minister's visit to West Bengal and to Bihar. Well, the TMC took a swipe at the Prime Minister, terming his visit to Bengal as political tourism. As Bihar Congress chief, meanwhile, Rajesh Kumar, on the other hand, has asked the Prime Minister not to come to Bihar merely to make hollow promises for the elections. प्रधानमंत्री जी केवल ये मान के नहीं आवे कि हम चुनाव में आए और चुनाव में आकर के चुनावी घोषणा करके जाएंगे, तो देश के जनता, बिहार के जनता भी उम्मीद से ना उम्मीद होने लगी। ये उत्तरी बिहार में जब गए थे तो कांग्रेस के समय में 27 चीनी मिल चलती थी। अब उस 27 चीनी मिल में मात्र 5 या 6 चल रहे हैं, और पिछले बार जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ के चीनी मिल के हम इसको चालू कर देंगे, तो वहां भी चले जाए, वहां के जो है चीनी मिल के चाय पी करके जाएं। बंगाल में आ रहा है, वो हिल्स में आ रहा है, आप देखिए डुअर्स में आ रहा है, फॉरेस्ट में आ रहा है। हम लोग का अच्छा लगते है, कश्मीर को छोड़ के, मिजोरम के छोड़ के, वो अभी मिजोरम में तो वो गया नहीं, वहां पर तो मणिपुर तो वो गया नहीं, वहां पर तो हमलाबाजी चल रहे हैं, और कश्मीर तो वो गया नहीं, वो हमारा पीसफुल टूरिस्ट स्पॉट में आ रहा है, पॉलिटिकल टूरिस्ट। Well, Tetri is connected with us. Tetri, good morning. Political tourist is what the TMC is now been claiming, and so are leaders from the opposition there in Bihar. But of course, there is a political significance to the Prime Minister's visit as he sounds the poll bugle, but also along with it is a big development push. Well, absolutely. Back-to-back Prime Minister's meeting and rallies, not just that, but also the inauguration of the development projects are all lined up. If we talk about Bihar, not just Bihar, but Uttar Pradesh as well, and in Sikkim as well, and in West Bengal as well. But now the visit of Prime Minister has been also looked from the political lens by the opposition parties, because we have been
seeing that how opposition parties, TMC leader Kunal Ghosh just attacked Prime Minister by saying that why did not visit Kashmir, why did not visit Manipur, and that he is visiting all these states as a political tourist, as a tourist. So that's the first attack coming in from the opposition ahead of Prime Minister's visit. But as far as the visit of Bihar is concerned, it's a 2 days visit in Bihar. He's going to inaugurate multiple projects lined up. Not just that, but also inauguration of airport is also lined up. That is for worth 1,500 crores. And in fact, that airport has a capacity where 1 crore passengers can travel in and year. That's the big push, big developmental push in the state of Bihar. And not just that, but other developmental projects will also be inaugurated in Bihar and in West Bengal as well. Remember that as far as Bihar is concerned, that will be the third visit of Prime Minister. So coming 48 hours, we are looking at 4-state visit of the Prime Minister. He will be in Sikkim, he will be in Bihar, he will be in Uttar Pradesh and also in the state of West Bengal. Techi, for the moment, thank you very much for joining in. With that, we head into a short break. Morning Now continues on the other side.